Good morning, students. Welcome to the online class of English. Children, I hope you all are fit and fine. Today, we are going to begin with our next topic, that is Unit 4 Unlikely Destinations, Section 3 Poem Imagination. This poem is written by the poet George Bernard Shaw. Before I begin with the reading and explanation of the poem, let me give a brief introduction of the poet George Bernard Shaw. George Bernard Shaw was born on 26 July 1856 and he died on 2nd November 1950. He was an Irish poet, playwright, critic, and political activist. Irish means related to Ireland. He wrote more than 60 plays, including major works such as Man and Superman, Pygmalion, and Saint John, with the range incorporating both contemporary satire and historical allegory. Children, incorporating means including, contemporary means of the same time, satire means to use humor or irony to expose and criticize people. मतलब आप जिसको हिंदी में बोलते हो व्यंग्य, किसी के ऊपर व्यंग करना, मतलब ऐसे सटायरिकल मजाक मजाक में कह लो उसके ऊपर एक व्यंग करना. एंड देन इज एलेगरी. एलेगरी मीन्स a poem interpreted to reveal hidden meaning, typically moral or political one. तो अगर हम सटायर और हिस्टोरिकल एलेगरी को दोनों को मिला लें, then he has written a lot many poems. George became the leading dramatist of his generation and in 1925 was awarded the Nobel Prize in Literature. Children, now coming to the poem Imagination. Basically, what is imagination? Imagination is forming new ideas not present to the senses. मतलब कह लो अपनी सोच में ही हम नए नए आइडियाज़ बनाते हैं, सोचते हैं. मतलब सोच में ही हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कई बार इन रियलिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल. बेसिकली इमेजिनेशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन. जो हम सोचते हैं अल्टीमेटली उसी को ही हम इन रियल लाइफ उसको इन रियलिटी उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को. Suppose now I tell you to imagine what will you do when you grow up, or what will you do on your birthday, means then in your imagination you will think of a number of things which may or may not be possible. So in this poem Imagination, the poet George Bernard Shaw is basically reminisces his childhood days, and he used to play with different games like as pirates and as you can say cowboy, and his childhood fancy and imagination gave him a chance to be the hero of all nations. Children, now let me tell you the summary of this poem Imagination. The poem Imagination is written by Irish playwright George Bernard Shaw. In this poem, the poet reminisces. Reminisces means think back to, मतलब याद करना, of his boyhood days, or you can say childhood days. The poet tells us that how he lived in a world of fancy and imagination. तो poet इस poem में बता रहा है कि कैसे वो एक काल्पनिक जिंदगी में जीता था जब वो एक बच्चा था. He tells us as a boy he used to play the game of pirates. Children, who are the pirates? Pirates are जिसको आप कहते हो ना समुद्री डाकू, जो जो समुंदर में है ना चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं, उनको समुद्री डाकू को बोला जाता है. Right? So pirates is the English name of the
the thieves of the sea. So he used to play the game of pirates as if he were sailing in the ship on the seven seas. Then he would think that he was a cowboy taking care of his cattle. तो यानी अपने बचपन में वो कभी मतलब चोर बन जाता था, डाकू बन जाता था, तो कभी एज अ काउबॉय, एज अ शेफर्ड अपनी कैटल की टेक केयर करता था. The poet, as a little boy, had clear imagination. He loved adventure. जब poet छोटा था, उसकी बहुत क्लियर इमेजिनेशन थी, क्लियर पिक्चर थी उसकी इमेजिनेशन में कि उसको एडवेंचर, थ्रिल, एक्साइटमेंट. ये हमने पिछले चैप्टर में भी मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवेंचर, है ना. दैट इज़ समथिंग अनयूजुअल, डेयरिंग, राइट, दैट thrills you is adventure, right? And so he loved adventure. He took a liking to reading books and discovered a lot of joy in reading. तो उसको रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, and he read a lot many books as well. And while reading, he would become so engrossed in reading that he would forget the hard and dull work of the day and would imagine himself as a character of that book. So मतलब जब वो रीडिंग करता था ना, तो कह लो बिल्कुल एनग्रॉस ही हो जाता था बुक में. यानी ही यूज टू गेट लॉस्ट एंड ही यूज टू इमेजिन हिमसेल्फ एज द कैरेक्टर ऑफ दैट बुक, of that play or book, whatever he is reading. After reading, now examples are given. After reading a book on the life of Eskimos, he imagined to be living with Eskimos. तो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने अपने बचपन में एक बुक पढ़ी थी एस्किमोस पे, and he started imagining as if he used to live with the Eskimos. In the land of ice and snow, he went hunting and fishing there in the world of fantasy. और imagination में ही वो एस्कीमोज के साथ hunting और fishing पर गया. Children, Eskimos are the people inhabiting the northern Canada, Alaska, Greenland, etc. तो अपनी कल्पना में, अपनी imagination में ही वो उनके साथ hunting के लिए और fishing के लिए जाता था. The book transported him to the world of imagination. He felt as if he was living with them as his mind sets his fantasy aglow. Aglow means, at its best. So, imagination में ही वो उस दुनिया में चला जाता था जो वो बुक पढ़ रहा होता था. वो खुद भी अपनी imagination में वहीं पहुंच जाता था. And उसका माइंड भी उसको मतलब उस कल्पना की दुनिया में लेकर जाता था. एंड इट वॉज द बेस्ट. मतलब उसकी जो थिंकिंग थी, जो इमेजिनेशन थी, दैट वॉज द बेस्ट. When he read the book written by Jules Verne, children remember the novel that we read earlier, जो एक्सर्प्ट हमने पहले चैप्टर का पढ़ा है, यूनिट 4 सेक्शन 2, A Journey to the Center of the Earth. That chapter is written by Jules Verne. And I told you that he wrote a lot about science fiction. तो जब जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने जूल्स वर्ने की बुक पढ़ी, तो he went off to the moon to have a look at it. आपको मैंने बताया था ना कि उसने he wrote about science fiction, यानी he wrote about space, even when there were no space shuttles और कुछ भी वैसा डेवलप नहीं हुआ था. उस टाइम पर इमेजिनेशन से जूल्स वर्ने ने वो सब कुछ स्पेस ट्रैवल और एयर ट्रैवल और अंडर वाटर ट्रैवल के बारे में लिखा था. तो जब जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने उसकी बुक स्पेस ट्रैवल के बारे में, स्पेस ट्रैवल के साथ रिलेटेड पढ़ी, तो देन he in his imagination went to the moon to look at it. After virtually enjoying his visit, he came back to reality. और virtually means not real. Like आपकी ये classes virtually लग रही हैं through internet, है ना. तो he also came back after enjoying his trip virtually. The book by Dr. Willingston took him to the forest of Africa, and he learned the ways of the jungle life under the guidance of the author
he read. तो फिर उसने डॉक्टर लिविंगस्टन की बुक पढ़ी, लिविंगस्टोन की बुक पढ़ी. ही वॉज अ बेसिकली डॉक्टर लिविंगस्टोन वॉज अ स्कॉटिश फिजिशियन who brought Christianity to Africa and undertook 3 expeditions. Means, he was very adventurous. And then he read the book, The Adventures of Huckleberry Finn, and he paid a visit to America. मतलब अगर लिविंगस्टन की बुक पढ़ी थी तो फॉरेस्ट ऑफ अमेरिका में पहुंच गया, अगर हकलबेरी फिल के एडवेंचर्स पढ़े तो वो फिर अमेरिका में अपनी इमेजिनेशन में अमेरिका पहुंच गया. ही प्रेफर्ड टू द वंडरफुल डीड्स by the heroes of the novel and became a hero himself. और तो जो भी नॉवल में होता था तो he would imagine that as if he was doing all those things and he became a hero himself. Of course, all in the world of fantasy and imagination. हाँ, ये था कि imagination में ही वो हीरो बन जाता था. Children, basically, as a poet, he grew up, his childish fantasies came to an end. So when he grew up, then his childish fantasies, जो उसकी बचपन की imagination थी, वो सब खत्म हो गई. He became serious about the harsh realities of life. फिर उसने लाइफ को समझना शुरू कर दिया और लाइफ की हार्श रियलिटीज़ को समझा. ही कुड नो लॉन्गर लूज हिमसेल्फ इन द इमेजिनरी वर्ल्ड. द पोएट सेज दैट ही स्टिल लाइक्स द मिस्टीरियस नेचर ऑफ बुक्स. तो लेकिन उसको ये रियलाइज़ हुआ बड़े होने के बाद कि वो सोच की दुनिया में या अपनी कल्पना की दुनिया में जी नहीं सकता है, उसको रियलिटी में आना ही पड़ेगा. लेकिन उसको अभी भी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. He wants to understand the books. He wants us, to understand that the books are the windows to the world. तो वो बेसिकली चिल्ड्रन इस पोम के थ्रू हमें एक मैसेज देना चाहता है कि दैट बुक्स आर द विंडोज टू द वर्ल्ड. सिटिंग एट होम वी कैन एक्सप्लोर द होल यूनिवर्स. We can transport ourselves to those unknown, unseen places and experience the same joy we get when we visit those places in reality. So basically, through this poem, he wants to give us the message that books are the windows to the world, and the joy and happiness that we get by reading a book is similar to the joy when you really visit that place. Now, coming to the पोइटिक डिवाइसेस. चिल्ड्रन, इस पोम में कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं? नंबर 1 इज़ ऑक्सीमोरॉन. Children, this is for the first time you are reading about this poetic device. Basically, it is a figure of speech which apparently contradictory seems appear in conjunction. Basically, आप कह लो कि दो वर्ड्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हुए इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं विदाउट कंजंक्शन. जैसे एग्जाम्पल देखो, इस पोम की ही एग्जाम्पल मैंने गिवन दी है यहाँ पर. आई हैड अ विविड इमेजिनेशन. नाउ चिल्ड्रन, विविड मीन्स ट्रू टू लाइफ, दैट इज़ रियलिटी, और इमेजिनेशन मीन्स विच इज़ नॉट रियल. तो दो वर्ड्स ऑपोजिट हो गए ना, एंड विदाउट एनी कंजंक्शन दे आर यूज्ड. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. So next is the rhyme scheme. Rhyme scheme, you know that it is the pattern of rhymes in the end of each line. हर लाइन का हम लास्ट वर्ड देखते हैं और देखते हैं वो किसके साथ राइम कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली ही पोएम की राइम स्कीम बनती है. So the rhyme scheme of this poem Imagination is ABCB, right? And then is the third poetic device that is used in this poem is allusion. Allusion is a figure of speech in which an object briefly and indirectly refers to the other person, place, thing, or event. That, for example, Dr. Livingston and Huckleberry Finn. Basically, he is talking about both these people to refer to his adventure, right? So here people are being referred to other person, place, thing or event. एक event को हमने लिया
एक ऑब्जेक्ट लिया, एडवेंचर को उसने लेते हुए लोगों की एग्जाम्पल दी, right? So with this is the summary and the poetic devices of that are used in this poem. I have explained you that. Now in my next video I'll be giving you the detailed line to line explanation of the poem Imagination. Thank you so much for watching my video.